Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. My name is Basim Raza and I'm a researcher at Center for Law and Security. So today we're going to talk on the topic that is US and Israel serious about achieving a sustainable peace in Palestine. For discussing this very important topic, we have two eminent speakers with us, Ambassador Zamir Akram. Ambassador Zamir Akram is a career Pakistani diplomat, the former permanent representative to United Nations and international organizations in Geneva. Our second panelist is Dr. Umar Abbasi. He's an associate professor at National Defense University, and he's an expert in Middle Eastern politics and the security landscape of Middle East. I welcome you both, sirs. So without further ado, sir, basically our the scenario here is कि हम कोशिश करते हैं कि इसको bilingual रखें for the sake of a wider audience reach. So but it depends on you. आप जैसे बेहतर समझें आप उस language को use कर सकते हैं. So my first question is from Ambassador Zamir. Sir, जब से हम बात करते हैं जो रिसेंटली दोबारा सीज फायर डील की बात की जा रही थी, सो आपको क्या लगता है कि ये जो सीज फायर को अचीव करने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद ट्रम्प साहब की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से भी हुई, इज इट अ जेन्युइन स्टेप टुवर्ड्स पीस और ये सिर्फ एक टेम्परेरी डी एस्केलेशन की स्ट्रैटेजी है, जैसे हमने अर्लियर दिस ईयर भी देखा, टू गिव इजरायली डिफेंस फोर्सेस सम ब्रीथिंग स्पेस? मेरा अपना ख्याल है कि ये एक टेम्पररी फेज है। और ये सीज फायर जो नेगोशिएट हुआ है, ये आई थिंक दो इसकी वजूहत हैं। एक तो ये कि जो ईरान के साथ जो इसराइल की झड़प हुई है और उसका भी एक सीज फायर हुआ था, तो उसमें इसराइल का ये इसराइली ये तो नहीं मानते, लेकिन उनका नुकसान काफ़ी हुआ है। दूसरा ये कि ऑन ग्राउंड इन गाजा इन्होंने जो इनके मकासद थे इसराइल इसराइल के वो ये हासिल नहीं कर सके। सबसे बड़ा इनका मकासद ये जो मकसद था वो ये था कि जो हॉस्टेजेस हैं उनको रिहा किया जाए। तो कुछ हॉस्टेजेस रिहा हुए हैं, लेकिन उसके जवाब में या उसके एवज कुछ फ़लस्तीनी भी जो हमास के फाइटर्स थे उनको भी रिहा किया गया, उनके लीडर्स को भी। और कुछ अभी और मजीद लोग हैं जो इनको रिहा करवाना चाहते हैं। सो एक तो ये है कि इनकी रिहाई थी। दूसरा ये कि हमास को किसी तरह से गाजा में या डिस्क्रेडिट किया जाए या उनको वहां से निकाला जाए, किसी तरह से उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय किया जाए हमास ऑर्गेनाइजेशन को। तो वो भी अभी जब से ये जंग जो शुरू हुई है, ये दोनों जो मकासद हैं ये पूरी तरह से हासिल नहीं हुए। तो आई थिंक इन्होंने एक टेम्पररी, जैसे आपने फरमाया, एक पॉज किया है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है इसराइल का और ब्रॉडर जो आपका जो मौजू है कि ये सर, पीस इन द मिडल ईस्ट या पीस इन इन पैलेस्टाइन, ये सर, तो जब से नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर बने हैं, गोइंग बैक टू 1995 96, तो उनका तो मकसद शुरू से यही था कि वो एक ग्रेटर इसराइल बनाए। और बिल्कुल। उनकी कोशिश भी यही रही है। और उनके साथ अमेरिका भी उस वक्त उनकी हामी बरता रहा है शुरू से लेके। और उसकी वजह जो है वो बड़ी साफ है, बड़ी सिंपल है। और उसकी वजह यह है कि इसराइल या जूश अमेरिकन लॉबी का इन्फ्लुएंस अमेरिका में इतना ज़्यादा है कि जो भी इसराइल चाहता है वो अमेरिका अल्टीमेटली वो करता है। बिल्कुल। इसके बावजूद कि वो कई मरतबा उसके अपने मफाद के खिलाफ हो। लेकिन उस वक्त से लेके आपने देखा इन्होंने ग्रेटर इसराइल की परसूट में जितनी जो अरब टेरिटरीज को इन्होंने ऑक्यूपाई किया था वो सारा इन्होंने उसको अब्जॉर्ब किया है। बिल्कुल सर। कॉलोनियल सेटलरिज्म इस्तेमाल करके फ़लस्तीनियों को उनके अपनी इलाकों से हटाया गया है। और सबसे बड़ा जो एक ओस्लो प्रोसेस के थ्रू जो एक मुआहदा निकला था टू स्टेट सोल्यूशन का, जो सर, अमेरिका ने उस वक्त ब्रोकर किया था, वो लीडरशिप जो थी उनकी, इज़ाक राबिन जो उसमें लेबर पार्टी का लीडर था, उसको भी असैसिनेट किया गया इन्होंने ही। यही लिकुड पार्टी के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जायनिस्ट जो हैं,
उन्होंने असैसिनेट किया, और वो जो टू स्टेट सोल्यूशन था उसको भी उन्होंने रिजेक्ट किया हुआ है। बिल्कुल सर। तो इस बैकग्राउंड के तहत अगर आप देखें तो सर। मुझे नहीं लगता है कि इसराइल का कोई, कम से कम जब तक लिकुड पार्टी और ये जो एक्सट्रीमिस्ट जायनिस्ट जो पावर में हैं सर। इसराइल में, ये लोग ये मानेंगे टू स्टेट सोल्यूशन का, और सर। इनका वही मौकिफ रहेगा कि किसी तरह से फलस्तीनियों को डिसएनफ्रेंचाइज करके अपने घरों से निकाल के और बेसिकली ग्रेटर इसराइल क्रिएट किया जाए। और सर। बदकिस्मती ये है कि अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में इनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि बॉटम सर। लाइन अमेरिका इनके साथ चलता रहेगा। सो सर। ये मेरी असेसमेंट है। Sir, we're also joined by our Executive Director, Mr. Rahman Azhar, uh, taking part in the conversation. So, sir, मैं second question जो आपने बात की थी, जो अल्टीमेट गोल ऑफ इसराइल की, मैं उससे रिलेटेड बात ये सर उमर से पूछना चाहूंगा कि सर देखें, जब लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के गोल की बात करते हैं तो ये इराडिकेशन ऑफ ऑल पैलेस्टीनियंस फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप, उसकी बात की जा रही है। जैसे ट्रम्प साहब के प्लान की भी बात की गई। डू यू थिंक दैट इट इज पॉसिबल कि तमाम पैलेस्टीनियंस को एथनिकली क्लेंस किया जा सके फ्रॉम गाजा स्ट्रिप? Thank you very much, Basim, and also to Rahman Saab, who have invited me for this very, very important discussion. So this is, I think I totally second the Honorable Investor Zamir Akram Saab, that this is just a temporary phase. There is not going to be a permanent peace. So I will here say that this is not the question of permanent peace. This is simply a question of whether peace will be there or not. So the way the things are going, and as you have mentioned, that the gradual plan is to totally eliminate the Palestinians from Gaza. Now this raises a very, very important question of international law. So under international law, that is not possible, and nowhere it is allowed that you just keep on eliminating the people, first killing them in the form of genocide, and then you have a plan to forcibly, or in the language of Netanyahu, voluntarily, if they want to go. You cannot do this under the eyes of international law. So this will be a big question of international law, humanitarian law, human rights law. Then the second question arises that, for instance, hypothetically, if we believe that this is going to happen, and this, then what will be the methodology or mechanism? Who will accept those Palestinians who are in Gaza? And this is not a question of only those Palestinians which are living in Gaza. There are hundreds and thousands of Palestinians already living in the form of refugees in Jordan and Lebanon and all other countries. So what will be their status? So that will be the question of the status of the people. And if some countries, for instance, some Arab countries, they allow the Palestinians to cross their border and come into their land, so what would be their status then? Whether they would be provided citizenship, or they would be considered as refugees, and for how long they would be considered the refugees. So considering all these questions, ethnic cleansing of the Palestinians is not feasible, that is not viable in terms of trying to have a peace. There would be no peace, and lasting is a separate question. So I don't find any immediate peace also. Zamir Akram Sahab, I just want to take your opinion on a very basic question. ये जो सारा conflict है, हमने इतने अरसे से जो है वो देखा है. Do you think all along the way this was Israel's plan that they were heading towards this, या फिर there were plans on the go as situation changed, तो इनके plans भी जो है वो change होते गए, जो अभी हम एक जिसकी culmination जो है वो गजा में या इस region के अंदर जो है वो देखते हैं? Yeah, I think that there's at least Netanyahu and his Likud party and these hardline group Zionists have had a plan from the very beginning.
अच्छा, And as I was mentioning in my previous comments, this has been there around since Netanyahu has been prime minister in 1995-96. And he has pursued this objective of a greater Israel, in that he, as I was saying, expanded the borders by taking over territories, Arab territories, Palestinian lands, settler colonialism, all this. And this genocide is deliberate. What we are witnessing in Gaza today, this genocide is deliberate, and this is continuing. The idea, the purpose of this genocide is to persuade the Palestinians in Gaza, and then they will come to the West Bank as well, to basically leave their homes, their lands, and go abroad, go to other neighboring countries as refugees. The Israelis don't care about this. They, in fact, want this. And so this is overall, this is a plan. And I think... और आपको लगता है जो ईरान वाली एपिसोड हमने देखी, that was also part of the plan, या फिर it was an improvisation of that Israeli plan? Okay. In that sense, also, I go back to the original thing. If you remember, there was a very important admission or a acceptance by a very senior American General Wesley Clark, if you remember, in 2001, when he said that the Pentagon colleagues had informed him that the Americans are actually planning over the years to bring about regime change in 7 countries. And those 7 countries, we have seen that regime change take place, beginning with Iraq, Libya, Right. Syria, Sudan, Yemen, and Iran was the last on the list. So I don't think it was an accident. Okay. Any country which was seen as the so-called axis of evil, or as the Iranians have said, the resistance front, those countries that posed any kind of challenge or threat to Israel had to be eliminated, and their leaderships had to be changed, and pro-American or American-approved governments had to be brought. So this is a joint project. Whether it is, you can say, from the American deep state, or whether it is the American Jewish American lobby, whatever. The point is that this is a policy that has been implemented consistently over the years, and we have seen this unfolding. The problem is that for them, Iran is a major hurdle. It is not as easy to bring about regime change in Iran as it was in other countries. Yes, and we saw this this attempt that during this last war actually failed. Because neither was Israel able to bring about any regime change, nor was it able to destroy Iran's nuclear capabilities. So in both those ways, this was a failure. Now the question is, how are they going to deal with Iran? And how are they going to deal with this larger problem? And so now Mr. Trump is talking about some kind of a deal coming through. I'm not too keen, or I'm not too optimistic about what kind of a deal he will come up with, because he wants a deal so that he can push his so-called Abraham Accords. But the deal has to be, as far as the Palestinians are concerned, it has to be a 2-state solution, which the Israelis are not ready to accept. So I don't know what kind of a deal Mr. Trump will be able to come up with. Exactly. Sir, Umar से I'd like to move towards Sir Umar. Sir ने बात की जैसे Abraham Accords की. So आपको क्या लगता है as a political analyst too and as a scholar कि regional normalization की जो efforts अभी तक की गई हैं और की जा भी रही हैं, आपको सबसे इफेक्टिव एफर्ट कौन सी नजर आती है? 2-स्टेट सोल्यूशन की फ्रांस ने भी बात की, अब हमने जो ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके मुंह से भी 2-स्टेट सोल्यूशन की बात सुनी, लेकिन अमेरिकन्स आर स्टिकिंग टू एब्राहम अकॉर्ड्स. हाउ डू यू कमेंट ऑन दैट? जी, एब्राहम अकॉर्ड्स बुनियादी तौर पर जो इनिशिएट किए गए थे, उनके पीछे जो फिलॉसफी थी वो ये थी कि ईरान को और उनकी प्रॉक्सीज को कंटेन करने के लिए
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो एलाइज हैं उनको इजराइल के इर्द गिर्द किया जाए और ये एक ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट किया जाए कि ये अपना डिफेंस खुद कर सके। लेकिन इब्राहिम अकॉर्ड्स की सबसे बड़ा जो उसको नुकसान होता है वो हम देखते हैं कि सऊदी ईरान रिप्रोशमा जो 1 साल पहले होती है, दैट वाज द फर्स्ट डेंट, वो डेंट उसमें पड़ा। अब उसको काउंटर करने के लिए देन अनदर प्रोजेक्ट्स जिसका जिक्र इनडायरेक्टली ऑनरेबल एम्बेसडर साहब ने कर दिया है कि दैट वाज द प्लान, और उस प्लान में बुनियादी मकसद यही था कि सबसे पहले जो एक स्ट्रेंथ है ईरान की, जो अपने प्रॉक्सीज के थ्रू पूरी रीजन में वो ऑपरेट करता है, तो पहले प्रॉक्सीज को न्यूट्रलाइज किया जाए, एंड दैट्स दे स्टार्टेड हमास, फिर उसके बाद हिजबुल्ला, एंड देन दे केम टुवर्ड्स ईरान। और अब जब ईरान को भी उनके क्लेम के मुताबिक हमने उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज कर दिया है और उनके साइंटिस्ट को मार दिया है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उनका न्यूट्रल कैपेबिलिटी ख़त्म हुई है। और दूसरा, साइंटिस्ट को मारने से आइडियाज़ ख़त्म नहीं होते, तो वो भी उसमें कामयाबी इनको हासिल नहीं हुई। लिहाजा इसमें हम ये देखते हैं कि अब वो गजा के इस प्लान की तरफ आए हैं, जो कि सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि ग्रेटर इजराइल का एक प्लान है कि अपनी बॉर्डर्स को इस हद तक आप एक्सटेंड कर दें कि जहां पर आपका जो डिफेंस है वो इनवल्नरेबल हो जाए, जिसके लिए वो काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका उनका भरपूर साथ दे रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में किसी भी रीजन के अंदर अगर आपने पीस कायम करना है तो उसमें रीजनली ओरिएंटेड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होना चाहिए, और वो रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर अनफॉर्चुनेटली मिडिल ईस्ट एक ऐसा रीजन है जिसमें अभी तक नहीं बन सका, जिसमें तमाम मिडिल ईस्ट के स्टेक होल्डर्स जो हैं वो किसी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को या रीजनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को बना सके। ठीक। तो अगर आप जमीर अकरम साहब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपने क्योंकि बिलावल भुट्टो ने भी इस चीज को मेंशन किया, प्लस अदर देयर हैव बीन सम अदर वॉइसेस एज वेल दैट पाकिस्तान इज नेक्स्ट इन लाइन एज फार एज इजराइल इज कंसर्न, हाउ कंसर्न शुड वी बी इस चीज से, और क्या आपको लगता है कि वाकई जो है ये कोई ऐसी बात है कि वी आर गोइंग टू बी देयर नेक्स्ट टारगेट? Well, I can say this much, that the Israelis have always got their sights on Pakistan, particularly because of Pakistan's nuclear program. And if you go back to the origins of the American opposition to Pakistan's nuclear program right from the beginning, it has been driven essentially, although they have talked about the idea that we want to ensure non-proliferation of nuclear weapons, etc., etc. But underneath that, they have come up with, acknowledged from time to time, that a nuclear-armed Muslim country will always pose a potential threat to Israel. So that is there. And we also know that in the 80s, 90s, perhaps even now, there have been plans. We know that in the 80s, Israel and India were conspiring to conduct some kind of operations against our program. And there may be contingency plans even now. Now, having said that, I also want to emphasize that Pakistan is not Israel. First and foremost, we have already crossed the nuclear threshold. We are already a nuclear weapon state. And we also have the capacity and capability to defend ourselves and protect ourselves in both conventional and strategic domains. Yes. And more importantly, we have the ability now to respond to any kind of action that Israel may take against Pakistan. So we have the capacity for this, and the Israelis know that. So it will be foolhardy for them to try and conduct the kind of operations they did against Iran, because they know that we have the capacity to retaliate with force. Now, we need to nevertheless keep our guard up. We need to be very alert about what is happening, and we need to follow the developments in the Middle East very closely, especially vis-a-vis Iran as well, as to what is happening vis-a-vis Iran and the US. And the best case scenario is for, at some point in time, the US-Iran nuclear negotiations resume and there is some kind of a agreement that comes about. Right. That is the best case scenario. But if that doesn't happen, then these tensions will continue to remain. The main problem in this region
is posed by Israeli ambitions and Israeli aggressive posture, belligerence towards everyone in the region, starting with the immediate neighbors and the Palestinians in particular. So, as far as the idea that there can be some kind of Abraham Accords, my own take is that unless the Palestinians are involved in a solution, no Abraham Accord or any kind of accord is going to be possible. In fact, I would argue that the Hamas attack in Israel in October of last year was driven by the concern that the Palestinians and Hamas had about the Arab countries, the so-called countries of the Gulf, coming to some kind of agreement or understanding with Israel under the rubric of the Abraham Accords, which would basically without taking them into conflict. Without taking them and basically abandoning the Palestinians. So what the Hamas act actually did was to derail this whole process of the Abraham Accords, which had started during Trump's first term. Now he wants to get back there, but to get back there, he has to find a solution to the Palestinian issue first. Otherwise, it's not going to work. Right. So, और उमर साहब से मैं वेरी क्विकली अगर हम उमर साहब की भी टेक ले लें, बिकॉज पहले ये कॉन्फ्लिक्ट किसी जमाने में जो है वो it was just an Arab thing, where it became Iran got involved after 1979 and it became a Muslim issue. तो आपको भी लगता है कि this will escalate further और it will take क्या उसे कहते हैं कि even और मुल्क भी जो है वो इसकी लपेट में आ सकते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान? जी, ओवरऑल ये शुरू से एक मसला तो है और इसको मुस्लिम उम्मा का मसला कहा तो जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में मुस्लिम उम्मा तो एग्जिस्ट करती नहीं है उस यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिससे हम एक आइडियल मुस्लिम उम्मा की हम बात करते हैं। अगर ऐसी कोई सूरत होती तो ये मसला पैदा ही ना होता। तमाम रियासतों के अपने इंटरेस्ट्स हैं। अरब जिसको जो इकनॉमिक्स की नज़र से देखते हैं, अगर कतर आज मेडिएशन कर रहा है या और अरब कंट्रीज जो हैं, they always look into it from the geoeconomics point of view. ईरान के अपने रीजनल एम्बिशंस हैं, वो उसके हवाले से करता है। तुर्किया जो है, तुर्की हैज इट्स ओन रीजनल एम्बिशंस। वो अंडर तैयब अर्दोगान उनकी फॉरेन पॉलिसी में एक चेंज आ रही है, न्यू ऑटोमनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारा तो इसी तरह से है। तो इसी तरह आप देखते हैं कि जो इनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, OIC, वो भी कोई खास इफेक्टिव नहीं है, सवाए इसके कि वो एक दो बयानात दे देते हैं। अदरवाइज आई डोंट थिंक वो इस चीज़ को वो इस तरह लेते हैं कि ये पूरे मुसलमानों के लिए एक मसला है। हर रियासतों के अपने इंटरेस्ट हैं, वो उस नज़र से उसको देख रहे होते हैं। तो हमें भी बीइंग पाकिस्तानी इसको इसी नज़र से देखना चाहिए। पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट कम फर्स्ट एंड देन ऑल अदर इंटरेस्ट। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होगा तो ये आप लास्टिंग पीस की बात नहीं कर सकते। और ये मसला एक तरफ से आप अगर इसे दबाएंगे तो किसी दूसरी तरफ से उठ जाएगा। आज एक नॉन स्टेट एक्टर को अगर आपने न्यूट्रलाइज किया तो कल कोई और आ जाएंगे। सो दिस विल कंटिन्यू टू माय अंडरस्टैंडिंग। सर, फाइनल वर्ड फ्रॉम एम्बेसडर ज़मीर अकरम। सर, क्वेश्चन ये है कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या रोल प्ले कर सकती है? हाउ डू वी सी दिस अनफोल्डिंग इन द फ्यूचर when we talk about upholding of human rights internationally, Human Rights Commission of the United Nations, upholding of the international organizations? How can the other states, including the Westerns and the Eastern states, including China, Russia, can actually play their role in this? Unfortunately, I must say that international law, human rights law, humanitarian law, all of these are very important aspects of this issue. And we have seen the International Court of Justice described in accuse Netanyahu of genocide. But look at the application of these laws. Mr. Netanyahu was wined and dined in Washington, although according to the International Criminal Court's decision, he should have been arrested. So nobody is going to do that in the West because of the reason I said right in the beginning, that the Jewish community globally and particularly in the West has a lot of influence. So
when it comes to Israel, international law, human rights, everything is thrown out of the window. Look at what has happened with this lady, the special rapporteur, Francesca Albanese, the special rapporteur who has been now the US State Department has taken action against her, and they have virtually banned her from the US, and they've taken these kind of steps against her, although she is doing her job, which is mandated to her by the Human Rights Council. So I'm afraid that in this case, human rights is not going to be the guiding force, or international law will not be the guiding force for these countries when it comes to determining and controlling Israeli behavior. Sir Umar, in a very brief sort of a manner, your concluding thoughts on this? Well, I think it is again a terminal phase which we have seen in December, January, when there was so hue and cry that now there will be peace between these two actors. But I think that this will not happen again unless the core of the issue, the root cause of the issue is addressed. And this, to the mindset of Donald Trump and Netanyahu, I am not seeing anywhere. They are not even talking about two-state solution. Yes. And on the other hand, the Palestinians are also divided. Hamas has its own rigid position, and the Palestinian Authority has its own position. So there is division within the Palestinians also. So I think this will linger on, and the ultimate sufferers would again be the people and the humanity. So this is very tragic, but this is the reality. Thank you so very much, sir. We're unfortunately running out of time, so we have to conclude it. Thank right you so here. much, Ambassador Saab, Dr. Umar Saab. Thank you so much. Thank you so very much, sir. Thank you very much for inviting. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Assalamu alaikum.